Party over with Donald Trump. We are back to being best friends. दोस्ती वापस से बनी रही. धुरंधर मोदी ने दिखा दिया. नरेंद्र है धुरंधर, इसमें कोई नहीं है दो राय. धुरंधर मोदी ने सिखा दिया. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. थैंक गॉड अंजना ने आगे की लाइंस नहीं बोली गाने की. पटती है लड़की पटाने वाला चाहिए, ये एक्चुअल लिरिक्स. पटती है लड़की पटाने वाला चाहिए. So, in a strange coinky-doinky, these lines are a copy-paste tweet of Economic Advisor Council member Sanjeev Sanyal, and it's from this song. Tunna, tunna, tat, tat, tunna. That's where we are. That's our big foreign policy win. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. मोदी ने पहले EU के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर दी, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फादर ऑफ डील्स भी कर दी, यानी मदर ऑफ ऑल डील भी हो गई, फादर ऑफ ऑल डील भी हो गई. क्या समझे? इन्होंने कहा ना फादर ऑफ ऑल डील्स. क्या? The mother and father of all deals. जोर से बोलो. The daddy of deals is done. मैं नहीं सुनिया. Father of all trade deals. Now, if you've been watching too much TV, like me, you will not know what exactly the India-US deal is, but you will know that it's historic. जो इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, आप इस ट्रेड डील का हीरो प्रधानमंत्री मोदी को कह सकते हैं. हीरो तो हम जानते हैं पहले से कौन है हर चीज का यार, because everyone on TV news says so all the time at the same time. If anyone knows how to do a deal, anyone, it is the Prime Minister of India, Narendra Modi. What a deal! Trump said 50% tariff, then he said no, 18% tariff, so clearly we won. We don't know what this tariff really means because nothing is official yet, but we know 18 is smaller than 50. And more importantly, 18 is smaller than 19. So we won, okay? Pakistan 19%. इस समय अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% टैक्स लगाया है. इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया पर 19% टैरिफ लग रहा है, जो भारत से 1% ज्यादा है. हमसे 1% ज्यादा टैक्स लगाया पाकिस्तान पे. 19-20 का फर्क तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है. अब सुनिए 19-18 का फर्क. Truly historic. On Twitter, we saw many journalists and analysts giving us the same numbers, the same script, the same analysis. One nation, one tweet. गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर. Great research, guys. But if you're going to celebrate 1% less than other countries like Pakistan, then there are countries from whom we have got many more percentages more. समझे? UK पे 10%, European Union got 15%, South Korea got 15%, Turkey got 15%, even Afghanistan got 15%. हम पे अफगानिस्तान से 3 गुना ज्यादा लगान. मतलब तालिबान से मोदी जी से भी ज्यादा यारी. क्या my dear friend Dolan? This is like the uncle of all deals. बाकी देशों की छोड़ो, let's look at our own nation. Before Trump, our tariffs with the US were at 3% average. मोदी जी ने कहा कि टैरिफ रिड्यूस टू 18%, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई टैरिफ रिड्यूस हो गया है 18%, बट एक्चुअली यार इंक्रीज हुआ है 3 से लेके 18%. मोदी है तो मुमकिन है. ठीक है मान लिया, ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं. वी गॉट ट्रम्प टू गिव अस अ लिटिल कंसेशन ऑन हिज रेसिप्रोकल टैरिफ्स, बट is 18% really something to celebrate given that our bestie relationships, despite our bestie relationships, we got more tariffs than many other friendly nations? But wait a second, you're missing the big news coming in, big news coming in. Underreported angle. Trump says India will buy $500 billion of US goods. But India's total goods imports in fiscal year 25 stood at $720 billion. This means he expects India's economy will supersize. That by itself is big news. एक minute. Let me get this straight, viewers. I don't want to get it wrong. So Trump हमको बोल रहा है कि $500 बिलियन का माल हमसे खरीदो, लेकिन कुल मिला के हम सब कंट्रीज से सिर्फ $700 बिलियन का माल खरीदते हैं. इसका मतलब क्या हो सकता है? मिल गया जवाब. ट्रम्प चाचा को लगता है कि हम इतने बड़े हो जाएंगे कि हम खूब सारा माल खरीद पाएंगे, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी मिल जाएंगे. ही एक्सपेक्ट्स सो मच फ्रॉम अस. मिल गया एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? There is a reason why this was an unreported angle, because there was no angle to it, just your desperation to suck up to your masters. इस तरह के थॉट सिर्फ खास जगहों तक ही सीमित रखो राहुल, पब्लिक के लिए नहीं. Now let's get down to the trade deal.
As we record this show, this whole deal lacks clarity. कागज अभी तक नहीं दिखाए गए हैं किसी को. And even our laser eye minister has said that he doesn't know the details since the commerce minister is engaging with the US trade representatives. Fair enough. He doesn't know much. It's the commerce minister who should know the fine print of the detail. Let's listen into the commerce minister. मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, और मैं हैरान हूं ये डबल स्टैंडर्ड जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं. 2011-12 में एक प्रकार से चाइना के साथ FTA करने का पाप राहुल गांधी ने किया था. मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की. झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं. राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है. राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? मिर्ची लगती है. बाप रे बाप. You'd expect the commerce minister to hold a press conference and take questions on what the deal is. Instead, all we get is Rahul is terrible. Yeah, that's why he's not the PM, he's not in power. But what's the deal? Now let's look at what Trump said in his Twitter post or Truth Social post. First he said, Russia से oil India अब नहीं खरीदेगा, बल्कि US और वेनेजुएला से अब इंडिया ऑयल खरीदेगा. So full stop on Russian oil. ट्रंप ने ये भी कहा कि मोदी की रिक्वेस्ट के बाद यूएस इंडिया पर टैरिफ कम करके 18% कर देगा. ऑल वेरी गुड. और यहाँ आता है एक ट्विस्ट. ट्रंप का कहना है कि इंडिया में यूएस गुड्स का टैरिफ अब 0 हो जाएगा. जी हाँ, 0. So we get 18% lagan, US gets 0% lagan. We stop buying oil from our friendly partner Russia and we don't know which sectors have opened up for the US, although Piyush Goyal did clarify this point. US ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है. In all of this, Modi's tweet was quite sober. It didn't confirm or deny anything Trump said except that the tariffs have been reduced to 18%. In all of this, the media should be asking some questions like always and get some clarity on what this really means for us. Instead, all we see was celebration. किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? Let's look at the oil angle. Trump says India Russia से oil नहीं खरीदेगा. इनकी इतनी हिम्मत. This is not the first time this is happening to us. पहले US ने इंडिया पर sanctions लगाए for buying oil from Iran. Then we bought oil from Russia on US's request. Trump suddenly came to power and said, now stop buying from Russia. Our ministers pushed back. But now it seems we've accepted this. If we have, then why did we waste one whole year sticking to our guns on this whole issue? I thought the big issue was this fact. We were not going to let US dictate its terms on us. Who we buy oil from is our business. According to some reports, completely moving away from Russia can increase our oil bill from $9 billion to $11 billion. And guess who will finally pay for this? I'm guessing the end user. Another important factor is agriculture. अगर American agricultural goods पे 0% tariff लगेगा, तो that can be disastrous for half of India's population that is still involved in agriculture. This is an important aspect for all Indian political parties who've always shown themselves as pro-farmers. Atal Bihari Vajpayee हो या मनमोहन हो या मोदी हो. All Indian governments have moved to protect Indian agriculture against global competition. And here's what the US trade representative is saying about the deal. According to him, for a variety of things, tree nuts, wine, spirits, fruits, vegetables, etc., they are going down to 0. This is a big win. He also said they've also agreed to reduce their tariffs for us on a variety of agricultural products, manufactured goods, chemicals, medical devices. That's going to be 0 for virtually everything. When I say virtually, I mean 98-99%. Even the Agricultural Secretary of the United States tweeted this. New US-India deal will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America. So, rural America wins according to America. What about rural India? It's very important to note, and I'm repeating that again, as we record this show, none of this has been officially signed on pen and paper, but the least you expect is for the government to give us clarity.
hold a press conference, take some questions. And if there's no clarity, if you yourself don't have clarity, can you at least tell your cheerleaders to stop going gaga, wah wah? जिन डोनाल्ड ट्रंप की सनक के सामने दुनिया हिल गई, मोदी उन ट्रंप को भी लाइन पर लेकर आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुपचाप ऐसा गजब काम किया कि आज दुनिया कह रही कि सरेंडर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। नरेंद्र मोदी ने उन ट्रंप को झुका दिया जो ट्रंप किसी की सुनते नहीं, जो ट्रंप सिर्फ अपनी चलाते। लेकिन मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आज का भारत झुकता नहीं, झुकाना जानता। Coming to Trump's last point, India will buy $500 billion worth of American goods. For context, भारत का इस साल का यूनियन बजट का स्पेंडिंग प्लान है $590 billion. Currently, India exports goods worth $85 billion to US and imports $45 billion, which means we are net exporters to the US. We earn more money than we spend. The Indian Express report says India committed to purchasing $100 billion worth of US products annually for 5 years. So what does this mean for us ultimately? 18 less than 50? So let's clap. ये तो फरेब होता है सर, फरेब। Indian foreign policy has always been about pragmatism. We think about ourselves first. But for the first time in history, we seem to be in a place of utter confusion. At least if you watch TV news, you will certainly not know what to write in your UPSC exam. एक दिन रशिया दोस्त, अगले दिन कट्टी, जाओ हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे। एक दिन रशिया बेस्ट डिफेंस पार्टनर है हमारा, अगले दिन यूएस के साथ पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर रहे हैं हम। एक दिन ट्रंप मोदी बेस्टी, अगले दिन दुश्मन, फिर शी मोदी बेस्टी मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। अगले दिन वापस से ट्रंप और मोदी विश्वगुरु बन गए। एक दिन मदर वॉल डील साइन हो रही है, अगले दिन फादर वॉल डील्स हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज है बस इस सब में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ मंगलवार के दिन हो रहा था। मंगलवार जैसे दिन पर कैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मंगल ये दिन साबित हो रहा है। पिछले मंगलवार 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान किया था और आज इस मंगलवार को भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गई है। मंगल ही मंगल, इस जंगल में सब मंगल सी। By the time we record this show, maybe some issues will be clearer for us. Maybe we do indeed have a father of all deals. Dealing with Trump anyway is possibly the most crazy thing, and full sympathy for all our Indian negotiators. But if there's one thing we've learned over the past 1 year, it is this. Don't count your chickens before they hatch. मतलब अंडे फूटने से पहले मुर्गियों को मत गिनो. Yet again, we're back to doing the same thing. Yet again, we're celebrating without reading the fine print. And yet again, we are failing to keep our government accountable. भैया हार पहनाने से पहले ये तो बता दो कि हुआ क्या है। As if that was not enough, all of TV news after celebrating father of all deals on Wednesday was busy calling Rahul Gandhi anti-Sikh because he called Ravinder Bittu a traitor. क्या राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया? क्या सिख कौम को गद्दार कहा, सिखों को गद्दार? ये पूरा बीजेपी नैरेटिव बनाने में लग गई है अब। राहुल गांधी पर सिख विरोधी मानसिकता के आरोप लग रहे हैं। मतलब खुलेआम असम का सीएम मियां मियां कर रहा है। No debates on this, no discussion on that. But राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के टर्नकोट को ट्रेटर बोल दिया तो he is anti-Sikh. बीजेपी को मौका मिल गया। खैर, ये डिस्ट्रैक्शन फाइल्स तो चलते ही रहेंगे। आप लोग कब तक देखेंगे? Lazy journalism. Father of all deals छोड़ो मित्रों, I have the mother of all news for you guys. News Laundry का हैप्पी बर्थडे आने वाला है। On February 7th, we will turn 14 years old. 14 साल, more than Modi's tenure. To celebrate this major milestone, we've launched a campaign that celebrates everyone who's built News Laundry. Not just the founders and employees, but the writers, supporters, long-time contributors, subscribers, and everyone else who's played such an important role in our journey. All the people who've built News Laundry. I am Manisha Pandey. I watch TV news so you don't have to. I run a newsroom the way it should be run. I built News Laundry. मैं रमाकांत शुक्ला, मैं एक co-founder हूँ. I built News Laundry. I'm Madhu Trehan. I build news media companies. I've built quite a few. I also built News Laundry. I 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 built News Laundry.
That was the OG Madhu Trehan, whose clothesline show started it all at News Laundry. सबकी धुलाई 2012 से मधु त्रेहन से शुरू हुई थी. And we're all just trying to keep up with what she started. These elections have seen revolutionary campaign methods, be it the social media blitzkrieg and even the more high-tech stuff like this. General Kenobi, you must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Oops. That's Princess Leia from Star Wars. We meant this. We knew Modi's campaign was futuristic, but taking a cue from Star Wars truly pushes the boundary. The only thing he's missing are R2-D2 and C-3PO. I am truly proud of being part of a movement that puts journalism and public interest before anything else. You heard that right. It's not a news organization. It's a movement. इस सब में you all also should be very proud. It's thanks to you guys, our viewers and supporters, that have kept us going for so long. खास करके न्यूसेंस की ऑडियंस. आप लोग हमारे साथ रहे, हमें सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर करा. अब सब्सक्राइब भी कर दो यार. Please subscribe. Scan the QR code on your screen and click the payment link below. Come build the future of news with us. Don't leave news to Shakal type characters. Come on. He does look like him, no? Thoda the resemblance, can you see? अब तुम इस खिलौने का खेल देखो. Anyway, when billionaires invest in media, they don't care कि न्यूज़ हो रही है या नहीं, या जर्नलिज्म का क्या हाल होगा, अदानी हो या अंबानी हो या जेफ बेजोस. They care about profit and other businesses more than news or journalism. Those who actually care about news and those who are impacted by news are people like you guys, the public. Public interest news चाहिए तो public को payment तो करना ही पड़ेगा. थोड़ा ही सही कर दो, because ultimately news can only be served and saved by the public, so it remains in public interest. I don't want to give more lecture because it's birthday party for us. We're going to soon celebrate our birthday. Please subscribe to News Laundry. Continue giving us all your support, all your love, all your likes and share. Stay with us. Stay in our journey of making news great again.